मेरा नाम अद्वैत है। कॉलेज के चौथे साल में मैंने ये नोटिस किया कि मेरे बाल गिर रहे हैं, और गिरने का एक ही रीज़न था क्योंकि ऑफिस कॉलेज के पानी में बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर था। फिर बीइंग जब फोर्थ ईयर में होते हो तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फिर मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने ट्रीटमेंट कराए, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई असर हुआ नहीं, बाल गिरते रहे। बस ये हुआ कि मैंने अपने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किए और कोई रिजल्ट नहीं हुआ था, करके मैंने ट्रीटमेंट कराना छोड़ दिया। फिर मुझे AHIS के बारे में पता चला। तो मैं एक बार आया, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखे, फिर मैंने एक बंदे को देखा जो उसने रिजल्ट करा रखा, ट्रीटमेंट करा रखा था, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं आके डॉक्टर अभिजीत से मिला। डॉक्टर अभिजीत ने सब ट्रीटमेंट के बारे में बताया। वो FUE ट्रीटमेंट जो कि काफ़ी नया था और सबसे एडवांस है। मैंने इसके बारे में बताया कि इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है, कुछ कटनी छटनी नहीं होती और ब्लड नहीं निकलता। फिर मैंने ये कराया। थोड़ी सी मतलब हल्की सी ट्रीटमेंट हुई थी और ब्लड हल्का सा आया था कि जो 2 हफ्ते तक रहा, क्लॉट रिमूव हो गया और फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है सर्जरी के टाइम पे कि आपको ऑफिस में छूटे। इस ट्रीटमेंट से मुझे ये हुआ कि मुझे बस 2 दिन के लिए ऑफिस छोड़ना पड़ा और बाकी सब कुछ स्मूथली रहा और कुछ हुआ नहीं। ट्रीटमेंट के बाद मुझे 2 महीने लगे थे मेरे इम्प्लांटेड हेयर के जाने में। इम्प्लांटेड हेयर के जाने के बाद मेरे 6 महीने में 5 से 6 महीने में मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आज आने के बाद मैंने डॉक्टर अभिजीत से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि ये 70% रिजल्ट है और मैं हमेशा की तरह इस बार भी डॉक्टर अभिजीत की बात कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले जो कहा था हर चीज़ वैसा ही हुआ। 2 महीने बाद बाल जाएंगे, 6 महीने बाद बाल आएंगे। इनिशियली रिजल्ट 50 दिखेगा, फिर 60 दिखेगा, 70 दिखेगा, तो भी उनके हिसाब से 70% रिजल्ट है। 2-3 महीने बाद ये 100% रिजल्ट दिखेगा तो डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। इवन अभी जो मेरी डेंसिटी है मैं उससे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक बार बाल होने के बाद ये डेंसिटी बहुत अच्छा होता है। रिगार्डिंग AHIS के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्टर अभिजीत एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब शायद वो सबसे अच्छे डॉक्टर है जिससे मैंने मिला हूँ। यहाँ के स्टाफ लाइक स्वाति हर एक चीज़ में मेरी हेल्प की, लाइक फ्रॉम द इनिशियल शुरुआत से लेके हर चीज़, जैसे कि हेयर की ट्रीटमेंट सर्जरी के पहले कैसे लेनी है, सर्जरी के बाद क्या करना है, सर्जरी के इन बिटवीन, फिर एनेस्थीसिया टेस्ट, हर काम में स्वाति ने बहुत हेल्प किया। इवन ट्रीटमेंट होने के बाद जब मैं यहाँ आया तो भी उन्होंने मुझे अटेंड किया, जो कि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में नहीं होते या नॉर्मल ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं होता, क्योंकि मुझे मतलब नहीं होता। उन्हें एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद वो नहीं सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, अगर वो नर्स हो या फिर नॉर्मल स्टाफ हो या फिर डॉक्टर अभिजीत हो, ये लोग खुद सब कुछ देखते हैं, हर एक रिजल्ट देखते हैं, हर चीज़ एनालाइज करते हैं, हर एक पे सजेशन देते हैं। तो अगर आप ये जा रहे हैं तो आप डॉक्टर अभिजीत से करवाएं, और वो बहुत अच्छा, मतलब आपको ऑफिस होने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई ईचिंग मुझे नहीं हुई। इवन मेरी ट्रीटमेंट यहाँ 12:30 के करीब खत्म हुई थी और मैंने 1:30 की ट्रीटमेंट रखा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप नेक्स्ट डे से उस दिन से ही सब कुछ कर सकते हैं अपना काम डेली बेसिस पर। ऑफिस के लिए आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। 2-3 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम करके कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। In this video, we are going to present hair transplant case study of grade 4 client. Let's go through patient details. After experiencing the hair loss in frontal area, Mr. Vikas decided to visit AHIS for an initial consultation. Meeting one of our specialists, he had an opportunity to learn about the FUE hair transplant and felt confident that having the procedure could really help him. We can see here his condition of scalp before hair transplant. The hairline designed according to his facial profile. Let's see how it looks immediately after hair transplant. You can see here how closely we have placed a graft with the help of our specialized implanter. The blood clots has been cleaned 12 days after procedure. Here you can see the actual density achieved for this patient. This is our high density and natural result. Our experience and attention to details is what allows us to achieve the most realistic result.
Let's see what patient has got to say about his treatment and result. Hello, my name is Vikas. I am 36 years old. I started losing my hair when I was 31. I tried so many things like allopathic, homeopathic, Ayurvedic, but nothing helped. Then I met AHIS through Facebook search and I went to the clinic. They explained me about hair transplant procedure. I got the procedure done in October 28th. So this is like my 6-month results. The journey was very nice. The surgery was very comfortable and post-surgery care was also very good. The doctors are very knowledgeable. And I think every youngsters who are losing hair must go for hair transplant because this is a very good solution. And I recommend AHIS for your hair transplant. Thank you. One of our goal is to change attitude about hair transplant. There is no shame in hair loss and there is no shame in wanting to look and feel your best. If you are considering a hair transplant, come in and talk to us. Welcome to AHIS Hair Transplant Clinic. We are back with another successful ultra high density hair transplant result. Let's check out the patient detail. This patient had severe baldness from front to his crown area. We have performed around 5,500 grafts by taking 2 sessions. In that, we have performed around 3,500 grafts in first session, and after 2 months, we have harvested around 2,000 grafts. As you can see in this picture, some vellus hairs are visible on his scalp. But while doing hair transplant, we don't consider these hairs. We have implanted entire area with full density. The hairline is designed according to his facial profile. We have performed this procedure with our modern FUE hair transplant. Let's see how it looks immediately after his first session. As you can see, we have covered almost 50% area in first session with full density by taking time of 2 days. The blood clots formed during hair transplant can be cleaned after 10 days. After cleaning clots, your transplanted hair will be visible, where you will come to know about your transplanted hair's density. As mentioned before, we call this patient again after 2 months for his second session. Here you can see the area which we have implanted in first session is now into a shedding phase. The remaining area we covered with optimized density by harvesting around 2000 grafts.
Let us show you now some of his result pictures. We were pleased to catch up Mr. Anand 1 year after his procedure to hear about his hair transplant experience and the impact it had on his life. Having researched and visited a number of clinics, he found that AHIS Hair Transplant Clinic fulfilled all his criteria. He knew that the success of his procedure would depend on him choosing the right clinic and the right doctor. Now you can see here the tremendous changes in patient old condition and his present condition. Now we will show you by combing his transplanted hairs. The freshly transplanted hairs look and act on the scalp like natural hairs. It continues to grow and retain the same original hair characteristics. New hairs can be washed, cut and treated like natural hairs. This result lasts for life with proper aftercare. Now you can see here the combing of his crown area hairs. Here we have implanted bit less density compared to the front, but it's enough to cover the baldness. We understand that our patient wants natural looking and permanent result. We know your expectations for hair transplant. We are making his hairs wet to show you the combing of wet hairs. This authenticates that the patient has got the high density in his transplanted area. High density hair transplant is now new trend in hair transplant world. Patient demands high density, but the high density hair transplant is possible only through a skilled surgeon. So even if you are looking into a hair transplant or just starting to lose your hairs and you are unsure if you even need a hair transplant or not, then come and talk to us. We will give you the best and the most honest advice.